Welcome, my dear students. Today we will solve two CBSE board exam questions based on areas related to circles. Question number 7 and 8, Maths class 10. Question number 7. In the given figure, AB is a chord of a circle of radius 7 centimeter and centered at O. Find the area of the shaded region if angle AOB is equal to 90 degree. Also find the length of minor arc AB. यह क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. So this is the given figure. AB is the chord of a circle of radius 7 centimeter and center O. Find the area of the shaded region. The shaded region, we have to find out its area. Central angle is given 90 degree and we have to also find the length of this minor arc. So solution. Given radius of the circle is equal to 7 centimeter, central angle AOB is equal to 90 degree, area of shaded region is equal to area of the segment ACB is equal to area of sector OACB minus area of triangle OAB. So now is equal to theta upon 360 degree into pi r square minus half OA into OB, because this is a right angled triangle. So right angled triangle का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. So therefore it is minus half OA into OB is equal to, now put the values. So 90 degree upon 360 degree into 22 upon 7 into 7 square minus half into 7 into 7 is equal to 1/4. इनको इससे डिवाइड किया तो 1/4. 22 into 7, 7 से 7 कैंसिल, माइनस हाफ 49 इनका मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 77/2. 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 77/2 माइनस 49/2 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर. So now length of the minor arc AB is equal to formula theta upon 360 degree into 2 pi r. Now put the values. So 90 degree upon 360 degree into 2 into 22 upon 7 into 7 is equal to 1/4 into 2 into 22 is equal to 11 centimeter. Now we will do the next question. In figure, PQ and AB are two arcs of concentric circles of radii 7 centimeter and 3.5 centimeter respectively with center O. If angle POQ is equal to 30 degree, then find the area of shaded region. ये क्वेश्चन CBSE 2020 बेसिक में आया है. So this is the figure, and AB and PQ and AB are two arcs of concentric circles. Radii 7 centimeter, OP and OA is equal to 3.5 centimeter, and angle POQ, this angle is given 30 degree. Then we have to find out this shaded region area. हमें shaded region का एरिया ज्ञात करना है. सॉल्यूशन. गिवन रेडियस OP is equal to 7 centimeter is equal to R1 से, and रेडियस OA is equal to 3.5 centimeter is equal to R2 से. सेंट्रल एंगल POQ is equal to 30 degree. OAB and OPQ are सेक्टर्स ऑफ टू सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ये दोनों सेक्टर्स हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की, OAB एंड OPQ. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर minus theta upon 360 degree into pi R2 square.
इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज, so 30 degree upon 360 degree into 22 upon 7, 7 square minus 3.5 square is equal to, इनको डिवाइड किया तो 1/12 इंटू 22, 7 को हम ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करने के लिए ले गए, तो 7 इंटू 7 अपॉन 7 माइनस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 7, सो इज इक्वल टू 11/6, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7 माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 0.5, ये 7 से इसको डिवाइड कर दिया, तो माइनस 0.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 11/6, ब्रैकेट में 7 माइनस 1.75, so is equal to 11/6 into 5.25 is equal to 9.625 centimeter square. So the area of the shaded region is equal to 9.625 centimeter square. इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कोई डाउट है, तो डोंट हेजिटेट, राइट योर कमेंट्स. I will give the answer, or I will make a video and upload. With this, best of luck. Thank you.